जय जगन्नाथ ओडिशा हिस्ट्री रो आ गोटे सीरीज को मु शुभस्मिता आपण मानकु वेलकम करूची कैक्स को देखिबा प्रीवियस क्लास रे हमें पढिथिले जैनिज्म इन इंडिया केमती कोन फ्लोरिश हेतिला कि मेन रोल लीड थिले जैनिज्म रो वर्धमान महावीर देन केते जण तीर्थंकर थिले कोन तांकर त्रिरत्न थिला कोन आपणकर केमिति कोन के फ्लोरिश करथिले कहा टाइम रे के फॉलोअर्स थिले बट आज देखिबा जैनिज्म इन ओडिशा देखिबा जैनिज्म इन ओडिशा कोन Odisha has been one of the most diverse states with historically account of different religion having originated and preached. Here among the popular cults, Jainism, the relief on the rock-cut caves of Udayagiri and Khandagiri are the earliest example of Jaina art in Odisha, datable to the 1st century BC. कौन रही उदयगिरी और खंडगिरी आपण मैंने जानी खारबेल जड़े स्टंच जैनिज्म थिले जैनिज्म को से फॉलो करुले on the other hand the scattered tirthankaras image are found throughout the length and breadth of the state belonging to 8th to 11th century CE कौन पाइले आमे माने अदर वे रे कौन पाइले स्कैटर्ड जोड़ा को रुइन ही स्कैटरली डिस्ट्रीब्यूटेड हे कि अछंदी कहारो इमेज गुडा को तीर्थंकर मानकर इमेज गुडा आर फाउंड थ्रूआउट द कर्नर एवरी कर्नर 8th to 11th century CE रे. If the centralization of Jainism is taken into account, it mostly spread out on the northeastern part of Odisha, that is the district of Kotikoti, Baleswar, Bhadra, Keonzhar, Mayurbhanj, Jajpur, Cuttack, Jagatsinghpur, Kendrapada and Khurda. Then next देखिबा कोन अछि एटा आपनकर उदयगिरी खंडगिरी उदयगिरी केव. Odisha has played an important role in the growth and development of Jainism. It was a great center of Jainism. Even much before the birth of Vardhaman Mahavir, under the royal patronage of King Karkandu and Kharabela, it became the state religion of Kalinga. कहा टाइम रे थिला दुई जण किंग थिले तांका ना कोन काराकांडू एंड खारबेला खारबेला तो जैनिज्म को फॉलो करथिले. Mahavir himself is said to have preached Jainism in Kalinga. एटा विश्वास करा जाय जे वर्धमान महावीर निजे आसिकी प्रीच करचंती जैनिज्म को कोठी आपनकर कलिंग रे. According to the Hathigumpha inscription, Kharavela claimed to have brought back the idol of Kalinga Jinna, which was taken away by kon Mahapadmananda ji ke Nanda ruler thile of Magadha. Jainism was flourished in Odisha up to 12th century AD. Next हमें देखिबा को किंग परे किए फॉलो करचंदी जैनिज्म को जेमिति बुद्धिज्म को किए फॉलो करचंदी आपनकर ओडिसा रे भौमगरस माने भौमगर मानकर कैपिटल कोन गुहदेव पातका एवं तांकर गोटे बुद्धिस्ट लिटरेचर अछि तांका टाइम रे फ्लोरिश हेतला तार ना होचे गांडव्यूह मन रखंतु समस्ते. It had immensely influenced the art and architecture of Odisha. A number of Jaina relics in the form of caves, temples, sculptures and statues are found in the different parts of Odisha, which speaks the volumes of Jaina culture and heritage of Odisha. कौन कहला जो गुडा को नंबर ऑफ जैन रेलिक्स हम मानको मिडिची इन द फॉर्म ऑफ को फॉर्म रे caves रो temples रो sculptures रो and statue रो जोड़ा के different part of Odisha रे भी अच्छी which speaks the volume of Jaina culture and heritage of Odisha. Then देखिबा the twin hills of Udayagiri जहा को कोन कहउचंदी hill of sunrise and Khandagiri broken hills Khandagiri broken hills are situated at a distance of 6 km to the west of Bhubaneswar, the capital of Odisha. कोठी भुवनेश्वर रे आपण माने तो खंडगिरी उदयगिरी निहाती जाईथिबे. देन आ एटा पढिला परे से जिबार कोन से जो जाई के आपण माने देखिबे एटा होची जैन मानकर कोन लेखा है से डिस्क्रिप्ट कोन अछि खारबेला कोन लिखि चंदी सेगुडा सब आपण माने जाई के देखंदो हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन. In the 1st century BC, the Udayagiri Khandagiri caves have the distinction of becoming the earliest Jaina settlement in Odra or Odisha and opened new vistas on the history and culture of Odisha in general and Jainism in particular. कोना एठु जणा पड़े जे ओडिसा रे earliest Jaina settlement थिला कोठु खंडगिरी उदयगिरी caves. Then it would not be an exaggeration if we term the Twin Hills remains as a heritable museum of art. कोना heritable museum of art, architecture, sculpture of ancient India. Then देखिबा whatever the fact may be, it was formed the 1st century BC onwards after the emergence of Chedi dynasty. खारबेला को dynasty राजा थिले
Chedi dynasty. Jainism did get the royal patronage and flourished throughout the length and breadth of ancient Odra or Kalinga. Chedi dynasty ର ଖାରବେଳ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରୟାଲ ପ୍ୟାଟ୍ରୋନେଜ ଦେଲେ ଜୈନିଜମ କୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଟ୍ରୋନେଜ ମିଳିଲା ଜୈନିଜମ କୁ, ସେତେବେଳେ ଜୈନିଜମ ଟା ବହୁତ ଫ୍ଲୋରିଶ ହେଲା କୋଠି ancient Odra ରେ. In the 1st century BC, Jainism appears to have reached the highest pinnacle of glory during the time of Mahameghabana Kharavela. Kaha time re Mahameghabana Kharavela ka time re. By his royal patronage, Jainism became the state religion. कौन है सेतेबेले तांको पैट्रोनेज रे जैनिज्म थिला कौन स्टेट रिलीजन, as is apparently clear from the Hathigumpha inscription which contains a salutation of arhatas and siddhas. कौन कहूची जितेबेले रॉयल पैट्रोनेज मिलेला जैनिज्म को खारबेलंक टाइम रे एटा हेगला कौन गोटे स्टेट रिलीजन हिसाब रे लोक माने ताको कौन एम्ब्रांस कले. as is apparently clear from the Hathigumpha inscription नु एटा जणा पड़े जे it contain a salutation to arhatas and siddha. It was Kharavela who was responsible in selecting and secluded location to accommodate Jaina ascetics. Then how के Somavanshi rulers in spite of their Saivite faith were tolerant towards Jainism. जो माने सोमवंशी थिले मु कहिछि religious tolerance से मानकर बहुत भलो थिला, अलगा धर्म मानको पाई भी से मानकर tolerant behavior थिला. In Shiva temple of Bhubaneswar such as Mukteswara and Lingaraj, miniature image of Jaina Tirthankaras was depicted. बुझेला. Then देखिबा next बुझि पाले समझते. Then Jaina images of Odisha are made of sandstone and condylite stone. The example of northern Odisha are usually of chlorite or muguni stone. आपण माने जानिथिबे मुगुनी पत्थर रे काम करंती, स्कल्पचर तयारी करंती, तो सेडा कोन कोथरे बना हिची chlorite or muguni stone. Metal images are known as Kakadapura, Bhanpur and Jajpur. In Akyutajapur, 10 Jaina images are included. 4 of the images are Amra Sasana Devi of Neminath. A beautiful bronze image of Rishabhanath from Kakadpur is now preserved in the Odisha State Museum. Koti ache bronze image ta Rishabhanath kara Odisha State Museum se ache. Then Jainism has been an undercurrent in Odisha's religious development right from the time को टाइम रो पार्श्वनाथ जेतेबेले प्रीच करथिले कोठी आसी कि कुमार और कुमारी पर्वत टू द प्रेजेंट डे, जोटा कि हम एबे कुमार और कुमारी पर्वत कहूचे, जेतेबेले सेठी पार्श्वनाथ आसी कि प्रीच कले से टाइम रो ओडिसा रो रिलीजियस डेवलपमेंट जैनिज्म रे हेई चली छि. देन खारबेल पैट्रोनाइज्ड जैनिज्म एंड मेड इट द स्टेट रिलीजन. पढिले हमें प्रीवियसली. देन द मुरुंडा किंग धर्म दामोदर से थिले जे कि जैनिज्म को पैट्रोनाइज करथिले. The rising popularity of Buddhism, Shaivism, Shaktism and later on Vaishnavism overshadowed the Jainism. तबले later development सबु हैला अलगा अलगा जो Buddhism, Shaivism, Shaktism और Vaishnavism flourish हैले सेतेबेले Jainism कोन हैला overshadow हे गला ए सबु religion रा under रे. Then the Nalas and Gupta allows Jainism to flourish in the 3rd and 4th century AD. Then the Marathas of the south and the early Ganga king Dadiga and Madhasa accepted Jainism. The account of Wensang talk of the popularity of Jainism in Odisha. Wensang भी तांका कहिचंती जे Jainism केमिति popularity gain करथिला 7th century AD. Then the Banapur copper plate reveals the solicitude of the Saladbhavas towards Jainism in the 10th century and 11th century AD. Banapur copper plate रो जाना पड़े जे Saladbhava माने भी towards Jainism in the को century, 10th century and 11th century AD. Then देखिबा literally heritage would mean anything that has been transmitted from the past, jaha ko ame past ro transmit kariche or handed down by the tradition. One would presume that the remains of Jaina like the rock cut caves kodu temples ro, sculpture ro, icons ro, books ro or paintings ro joda ko ame heritage of Jainism boli koche. This is however only the extrinsic heritage that we see and value. एगुड़ा को होचंदी कौन extrinsic heritage जोटा कि हमें देखुचे और तारा value भी करुचे. There exists something known as the intrinsic heritage which we cannot see, like the influence of Jaina philosophy on other cult, on literature, art and society. Then देखिबा next कौन ए इंट्रिंसिक हेरिटेज गुड़ा का बहुत इंपोर्टेंट. इट हैज हेल्प्ड शेपिंग द प्रेजेंट कोहेसिव कल्चर जो गुड़ा का एबे कोहेसिव नेचर कल्चर जहाँ भी अच्छी ताको प्रिजर्व करा हिची एवं ताको प्रेजेंटली कौन करा होची शेप दिया होची. हेंस ओनली स्टडी ऑफ द अपरेंट Jaina remains will not suffice to summarize the heritage of this faith, but also a deeper study of the culture of the state is required.
कौन दरकार गोटे डीपर स्टडी दरकार Jaina did not believe in the authority of God and the God was the creator. They began to worship the Tirthankara and several gods from the Hindu pantheon. सेमाने कौन कले जैन माने आपण मानको मु प्रीवियस क्लास रे पढितली को माने जैनिज्म को बहुत फॉलो करूतिले जो माने मर्चेंट क्लास रे थिले वैश्य माने तो जैन किंतु बिलीव करू नथिले अथॉरिटी ऑफ गॉड रे तो सेमाने कौन कले पूजा कले जो माने तीर्थंकर जो माने थिले आ बाकी हिंदू गॉडेस मानको जहाँ अल्प बहुत पूजा करते thus the Brahmins never really opposed the Jaina and tolerated it. Brahmins माने कौन never really opposed Jaina करना दे एवं याको tolerate करना करचन. The iconographic representation of Jaina gods and Brahminical gods is similar to a layman. However, to distinguish the Jaina from the Brahminical deities, one should look out the four distinguishing sign. कौन the flying those features were the standing and sitting position of the icons, then the chauri bearers, the kevala tree and flying gandharvas with garlands and champaka marks umbrella, the trefoil arc etc and the nudity of the image. कहितली दुईटा सेक्ट रे जेते बेले डिवाइड हे गला जैनिज्म कोन श्वेतांबरस एंड दिगंबरस सेमती बुद्धिज्म कोन दुईटा सेक्ट रे महायाना एंड हिनायाना. जैनिज्म रे कहूची जो माने श्वेतांबरस से माने कौन माने व्हाइट क्लैड माने पिंधुतिले बट जो माने दिगंबरस थिले से माने न्यूडिटी को फॉलो करूतिले. देन देखिबा नेक्स्ट कोन एटा आपनकर लॉर्ड महावीरकर इमेज एटा आपनकर खंडगिरी उदयगिरी रे अछि खंडगिरी यस एटा आपनकर कोन कोरापुट रो सुबाई जैन टेंपल जोटा कि आपण माने चाहिले विजिट करके देखि परिबे कोन कोन अछि सेठी देखिबा. प्रीवियसली एटा आपनकर खंडगिरी कुमार एंड कुमारी पर्वत जोटा कहउचंदी आपण मानको मो प्रीवियस क्लास रे पढैछि खारबेले जो जैन धर्म को बिलोंग करथिले कोन थिला तांकर केमिते से फ्लोरिश करिचंदी रॉयल पैट्रोनेज देइचंदी तांकर टाइम रे हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन नो जणा पड़े देखिले. एटा आपनकर सुबाई जैन टेंपल ओडिसा रे कोन कोन जैनिज्म रो रही कौन रेलिक्स गुड़ाक कौन अच्छी कि कौन मनुमेंट्स अच्छी से गुड़ाक मु कहली आपनकर खंडगिरी उदयगिरी सुबाई जैन टेंपल कोरापुट रो ठीक अच्छी आपनकर जैनिज्म ऑफ ओडिशा एठी एंड हैला. देन नेक्स्ट क्लास रे हमें पढ़िबा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिशा केमिति ब्रिटिशर्स माने आसिले मराठा मानन को ओवरथ्रोन कले केमिति कौन दीवानी राइट्स बेंगल बिहार ओडिशा रो को बैटल ऑफ कौन केमिति कौन को बैटल थिला बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ बक्सर देखिबा. देन नेक्स्ट हमें मॉडर्न पार्ट सारिला परे हमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर पार्ट को जिबा कहार ओडिशा रो आर्ट एंड आर्किटेक्चर टेंपल आर्किटेक्चर देखिबा. देन आपनकर कौन जगन्नाथ टेंपल रो आर्किटेक्चर केमिति कौन देखिबा मुक्तेश्वर देखिबा लिंगराज देखिबा धीरे धीरे आर्ट एंड आर्किटेक्चर पोर्शन सारिला परे आमे इंडियन पार्ट रो हिस्ट्री को जिबा. इंडियन पार्ट रो हिस्ट्री को गले बहुत भल से पढ़िबा से जिंस गुड़ाक कौन कौन जोटा कि आपन को एग्जाम ओरिएंटेड रे आपन मानको एग्जाम ओरिएंटेड रहिबो आपन मानको बहुत हेल्प हबो. क्लास एंड करिया पूर्व मु कहि रखिया पई चाहूची जे आपन मानकर गोटे फ्री टेस्ट सीरीज दिया होची फुल लेंथ रो टेस्ट सीरीज आपन माने चाहिले सेटा एनरोल करके आसी एग्जाम देई परिबे. फ्री वेबसाइट रे आपन माने एनरोल करिवे करिकी एग्जाम आसी दियंतु तीनटा स्लॉट रे एग्जाम अछि एग्जाम दियंतु जोथि पे हमर कैश प्राइस रखा हिची फर्स्ट सेकंड थर्ड मानको और डिस्काउंट भी अछि आपनकर टेस्ट सीरीज रो एडमिशन फीस रे. देन आसंतु जल्दी जल्दी जॉइन होंतु एग्जाम दियंतु आउ हां मेंस रे आपनकर कोन डेली आंसर राइटिंग रे गोटे गोटे क्वेश्चन सब दिन जाउची टेलीग्राम ग्रुप रे भी से क्वेश्चन आसुची टेलीग्राम ग्रुप को देखंतु क्वेश्चन को अटेम्प्ट नियंतु आसु न आसु एटलीस्ट जदि कोटो देखिकी भी लिखुचंदी गोटे थरा सेटा पढंतु देन सेटा को बुझिकी लिखंतु सेही लेखाटा को हमको पोस्ट करंतु टेलीग्राम रे देखिबु कोन कोन करेक्शन आपनकर कोन भूल अछि कोन ठीक अछि जोथरे कि आपण मानको ही इंप्रूवमेंट मिलिबो. ठीक अछि थैंक यू.